So namaskar all of you. Odisha Education Service तारो जो हमरो अर्ली बैचेस स्टार्ट हेची तो एबे हमें वेस्टर्न एजुकेशनल थॉट जोटा हमरो एजुकेशन पेपर रो एजुकेशन फिलोसॉफी अंडर रे जाउची सेटा हमें डिस्कस करूछु। तो आज हमें प्रैग्मेटिज्म रो प्रथम पांचटा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करिवा। टोटल ईच चैप्टर रो 30 टा conceptual multiple choice questions आपनको रोची so that आपनको concept टा properly clear ही परिबो। ता सहित आपनको पूरा डिटेल मॉडल आंसर ता सहित रोची so that केवल एई क्वेश्चन टा नुह एई क्वेश्चन रिलेटेड आउ जो क्वेश्चन से पडुची सेटा भी आपण कर परिबो। सो प्रथम पांचटा क्वेश्चन देखिबा। एटा हमरो OES कोर्स रे सबु चैप्टर रो 30 टा क्वेश्चन अछि विथ क्वेश्चन बैंक फॉर्म। क्वेश्चन बैंक फॉर्म माने क्वेश्चन टा देला तार आंसर टा देला तापर तो एक्सप्लेनेशन टा दबो कोन पई से आंसर टा हिच। तो प्रथम क्वेश्चन टा देखियो प्रैग्मेटिज्म ऊपर वेस्टर्न एजुकेशनल फिलोसॉफी। ऑलरेडी वेस्टर्न एजुकेशनल फिलोसॉफी 16 टा फिलोसॉफी हमें कंप्लीट करि सरछु। तापर नेक्स्ट वीक रे हमरो इंडियन फिलोसॉफीज करिका ता ऊपर ईच चैप्टर रो 30 क्वेश्चंस हमें ओके डिस्कस करिवो। तो बड़ा आसंत प्रथमे क्वेश्चन 1 को pragmatism holds that truth is a fixed concept independent of experience eta pura bhul okay which works and has practical consequences, a metaphysical absolute derived solely from authoritative scriptures. So B are correct answer hobo that which works and has practical consequences. Okay, कौन पे ना as the name suggests pragmatism माने कौन okay सितरे अपना करो basically real life situations से learning by doing okay actual कामों करी की पिला सीखिबो। So pragmatism believes in utility and applicability in real life situations. एटा first important thing। So तापरे truth is dynamic and evolves through experiences। तनु गोटे static truth कि गोटे eternal truth बोली किछि न थाए। It rejects fixed or eternal truths like idealism or realism. Practical consequences validate the truth. जदि actually तार किछि लाभ अछि कि सेटा किछि फॉलो करूछि ओके ताहले तार ओके it is validated right. So truth would depend on what are its practical consequences okay। तापर आसिला John Dewey emphasized that ideas must prove useful to be true। जो ideas गुडा अच्छी से आदि useful होबनी पिलांको पे ए जे तो हम स्कूल सिचुएशन रे पहुंचू ताले तार लाभ किछि नै। John Dewey emphasized that ideas must prove useful to be true। Truth is not inherent, it is created through interaction। so प्रथम रो किछि ओडे ओके फर्स्ट रो कि आसेनी it truth टा interaction through रो truth टा आपन ओके that is basically built। Experimentation is central to discovering truth। तेणु truth कौन ता पई experimentation दरकार ओके बे experiment आपण करिवे सेथरे आपण जानिया पई पाइबे कि अच्छा ए जिंसटा कले एटा होची राइट। So experimentation is central to discovering truth। Truth is not found but made through action okay। So you can uncover or find the truth through action only। A pragmatic truth changes with time and context। तमने कौन डायनामिक जोटा आज ट्रुथ ओके से काली ट्रुथ न ही पारे से चेंज होबो टाइम सहित कॉन्टेक्स्ट सहित ओके। इटर्नल ट्रुथ बोली किछि नाही अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म राइट। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन जोटा कि बी ओके प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस। एटा हला क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 को आसंतु in the context of education pragmatism emphasizes what? Discipline and strict curriculum मोटेनु हमें देखिलो से जेते फ्रीडम चाइल्ड सेंट्रिक है कि जेते फ्रीडम दे परिबो पिला निजे बुझी की तरह ओके जो जिंसटा ताकू खाली पॉइंट ता देखै देले कि डायरेक्शन ता देखै देले से तापरे निजे से जिंसटा करिवो। ट्रांसमिशन ऑफ एंशिएंट नॉलेज नो। लर्निंग बाय डूइंग एंड एक्सपीरियंस this is the actual context of education okay। Pragmatism law okay education related this is the most appropriate। Learning by doing and experience
memorization and repetition सेथरे नहीं. So pragmatism supports experiential learning over rote memory. पिलार experience कौन होची? से experience से सीखुची. होशी वाली से. Okay. Rote memory means होशी वाली. It advocates for project method and practical activities. Project method तो एटा भी आस करिवो. आ भितर project method कोर्स रे आपनकर दरकार थे. Okay. Basic कोर्स रे project method को मेथड को फिलोसफी एडवोकेट करूँ. Okay, so learning becomes meaningful when rooted in real world situation. John Dewey's lab school emphasized this principle. The learner is placed at the center of the educational process. Okay, so it is learner centric. Okay, concepts are grasped better through hands-on experience. କରିକି ସେଟା ଶିଖିବ ସେ learning by doing ତାହେଲେ ତାର ଓକେ ବହୁତ ଭଲରେ ସେଟା କନସେପ୍ଟଟା କ୍ଲିୟର କରିବ. Problem solving and inquiry are promoted. Static and rigid content is discouraged. The fixed content thibo सेटाକୁ discourage करा जाउची pragmatism. Development of critical thinking is prioritized. Real world solutions, real world problems ପାଇଁ ଆପଣ solutions କେମିତି ବାହାର କରିବେ ତା ପାଇଁ critical thinking ଦରକାର. Thus experiential learning is free in pragmatic education. Okay. तापर question 3 की आसंतु. Which of the following best reflects the pragmatic view of teacher's role? Authority who delivers content. So ताको authority हिसाब रे pragmatism रे निया. Facilitator of learning experiences, which is correct. Teacher is facilitator of learning experience. पिला को जो learning experience मिलिबो से ताको facilitate करियो. तारो टिके guidance देबे. Direction दिखे देबे. पिला निजे ही करियो. Okay. So source of moral and ethical values, no. Examiner of theoretical knowledge, no. So B will be the correct answer. So pragmatism sees the teacher as a guide, not a transmitter. ताको काम नुह कि जहाँ गोटे जिनसटे idealism रहला कि जहाँ जहाँ सब आगुरु अच्छी ताको पिला को transfer करो. So he is not just a transmitter. Okay, he is a guide. The teacher creates environment for discovery. Student has to discover knowledge. Okay. Learning is student-centered, not teacher-centered. The teacher encourages questioning and exploration. Teachers simulate curiosity and encourage experimentation. They help link learning with practical life. Emphasis is placed on group work and cooperation. Moral imposition is discouraged. Ethical values emerge from experience. तो कहा करता हूँ, एटा ठीक, एटा भूल. तो सेटा सी निजे तोले करूची एक्सपेरिमेंट सी जानी परियो कोटा ठीक कोटा भूल. Okay, so moral imposition is discouraged. This is moral, this is immoral, this is good, this is bad. Okay, so जो ethical values तोले गोटे लोकर से केमती इमर्ज करिवो से निजे निजे तोले interact करिवो सोसाइटी संगे ता एक्सपीरियंस रो ethical values रो इमर्ज करिवो. Teacher adapts to student to child's interest and needs. Hence facilitation is central in pragmatic pedagogy. Okay, the teacher is seen as a facilitator to create a proper environment of learning for the student. That is what is the concept of pragmatic teacher. Question 4 question. Pragmatism rejects the notion of which of the following. So B will be the correct answer. Learning through play, predetermined curriculum, individual experience, trial and error. Rejects the notion of. So a dynamic, okay, curriculum predetermined curriculum, okay, pragmatism rejects it. Pragmatism emphasizes flexibility in curriculum design. Curriculum should evolve with society's needs. Rigid and prefixed content is considered outdated. In a modern society, society time change, requirement change. Okay. Individual interest and social utility guide curriculum. It supports interdisciplinary and integrated approaches. Students should influence circular decisions. Okay, curricular decisions, sorry. तमाने कौन curriculum रे कौन रहिबो कि न रहिबो सेटा पिला को भी पचराओ ताकर भी इनपुट दरकार. Learning is contextual, not universal. तमाने it is जो context रे okay जहाँ को पढ़ा होची सेटा बेसी important एमती नुह कि you know सब जगह one size fits all universal नुह सेटा ठीक है. Life centric themes are preferred over textbook centric topics.
एक्चुअल रियल लाइफ रे जो सिचुएशंस आसुची कि आसियार संभावना अछि ओके ता ऊपर बेसी फोकस रोच टेक्स्ट बुक टाइप रो टॉपिक्स से बेसी फोकस रो डायनामिक करिकुलर रेस्पॉन्स टू लर्नर्स रियलिटीज तेनु लर्नर माने का फीडबैक को नहीं की आपनकर करिकुलम चेंज हो therefore predetermined structure are not suitable for pragmatism. Okay, so B will be the answer. Predetermined curriculum. Seta bhul that is not one of the fundamental features of okay your pragmatism. Last question जोड़ा हमें discuss करेंगे. Actually course रे about 30 questions ଅଛି each chapter. Okay, we are discussing 5 from each. We will discuss. The pragmatic aim of education is primarily to develop the intellect, preserve cultural heritage, promote democratic citizenship or impose ethical codes. तो काटिबे आपण impose ethical codes हबनी, develop the intellect generally हबनी बट पाखा पाखी अछि. तो रहिगला preserve cultural heritage और promote democratic citizenship ता भितरु सीटा ही ठीक हो. Pragmatism links education to social progress. John Dewey highlighted democratic ideals in education. Education prepares individuals to function in democratic society. It promotes participation, cooperation and responsibility. Learners engage in group work and shared projects. ହେଲା मिसिकी काम करिवे बड़ कामटे जोटा समस्त कंट्रीब्यूशन रु प्रॉपर्ली सरी परिबो. Education is a means to reconstruct society. It teaches critical engagement with social issues. So this is very important. Individuals develop habits of thought conducive to democracy. Okay, pragmatism ro seta gote advantage. Citizenship is not inherited but cultivated through action. Right? तो जहाँ फादर यू नो गोटे पर्टिकुलर देशर सिटीजन अच्छा एमती माननी कि से ही ओके सिटीजन है से देशर सो सिटीजनशिप इज नॉट इनहेरिटेड बट कल्टिवेटेड थ्रू एक्शन हेंस डेमोक्रेसी इज द सेंट्रल एजुकेशनल ओके सो दीज आर द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ प्रैग्मेटिज्म देखो तो सो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एबा आपनकर जो फैक्चुअल क्वेश्चन नु ओके सो कॉन्सेप्ट जदि क्लियर अच्छी एबे ई पांचटा क्वेश्चन को भूले की जेमती पकेबी आपण आराम रे कर दे पारी काहे ना आपण कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छी तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ऊपर बेसी आपण फोकस करन ओके सो हमर जो एई पर्टिकुलर कोर्सटा मु कहतली सो आई जस्ट टेल यू समथिंग अबाउट दिस कोर्स ओडिशा एजुकेशन सर्विस रो तो ये हमर ओईएस रो कोर्सटा जोथरे आपनकर ओडिशा एजुकेशन सर्विस रो टोटल जदि हमें देखिबा ओके ऑल एस्पेक्ट्स ऑल पेपर्स एथरे कवर होची अराउंड 600 आवर्स टोटल कोर्सटा अछि जोडा कि हमें एबे ऐप रे अपलोड करछु ओके तापर जेतले आसी जिवो आपनकर एग्जाम सेतले लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हेची ओके और आरो सबुटु जा नॉर्मली तार थ्योरी क्लासेस एगुला तो शुरू होए मेन मोस्ट इंपोर्टेंट हला टेस्ट सीरीज वरिका भी बट मोस्ट इंपोर्टेंट हला तार चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन रा जेंति हमें प्रैग्मेटिज्म रे डिस्कस करू आउ गोटे कोन बड़ एडवांटेज यारो आरो लाइफ टाइम एक्सेसिबिलिटी माने जो माने 5 वर्ष परे भी देबे से माने भी एबेटू किनिकी ताको प्रैक्टिस करि परिबे काहे ना एटा 30 वर्ष पे वैलिड रहइबो ओके आपण एज पळेबो तथापि ऐप वैलिड रहइबो तेनु जदि कि भाबुचंती कि मो एटा लाइक नेबी वर्ष पर एटा यू नो पुनी याको रिन्यू करे पर सेंति किछ नै एटा लाइफ टाइम जोडा कि हम डिफाइन करछु 30 इयर्स पर्यंत 30 इयर्स पर्यंत एटा ऐपटा आपनकर एक्सेसिबल रहइबो ओके लाइफ टाइम एक्सेसिबिलिटी आ कोर्स फी आपनकर रहउची कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जोडा जीके इंग्लिश आउ एजुकेशन एगुडा ईच को आपण कहि परिबे
5000 तार कोर्स फी रोची ओके एंड दिस इज कंप्लीटली आपनकर ऑनलाइन कोर्स टाइटा OES comprehensive course okay all subjects included आउ तार previous year questions and chapter wise important MCQ जोड़ा आज 5टा में डिस्कस करलो ओके तो ईच चैप्टर में 30टा क्वेश्चन बैंक फॉर्म रे अछि ओके सो कोर्स फी आर 5000 रुपीस रोची इन केस यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन ताले जो स्क्रॉल पे जो नंबर दूची 7684054656 सेथरे कॉल की व्हाट्सएप करके आउ डिटेल्स जानि पारि ओके OES टा ऑब्वियसली गोटे प्रेस्टिजियस और गोटे बहुत ही टफ एग्जाम तेणु आगुरु टिके प्रिपरेशन करले भलो और कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन करले भलो ओके सो आई विश द एस्पिरेंट्स ऑल द बेस्ट नमस्कार।